प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल फेलोशिप्स एंड कैरियर की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। काफ़ी अर्से तक कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी, कुछ मसरूफियत की वजह से, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनकी तरफ से बार बार मैसेजेस आ रहे थे और टेलीफोन कॉल्स आ रही थी कि इस चैनल को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हैं फेलोशिप के हवाले से। ख़ास तौर पे जो न्यूली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। और इसके अलावा जो न्यूली अपॉइंटेड लेक्चरर्स हैं वो भी पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैंने सोचा कि जो कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए इस चैनल को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। और इसके अलावा स्टूडेंट्स की और डिमांड थी कि जी हमें एमसीक्यूज़ के हवाले से भी कि वीडियोस अपलोड की जाएँ, ताकि एग्ज़ाम के हवाले से भी हमारी तैयारी हो सके, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी भी तैयारी हमारे लिए मुमकिन हो सके। तो उसके लिए भी मैंने एक सब सेक्शन इस चैनल का शुरू करने लगा हूँ। उस सब सेक्शन में जो एमसीक्यूज़ से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, प्रेजेंटेशंस होंगी, वो अपलोड की जाएंगी, ताकि इस चैनल से ज़्यादा स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकें। आज हम कैलकुलस 1 का जो चैप्टर 1 है फंक्शन, उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ है, अ क्वांटिटी विच रिटेन्स द सेम वैल्यू थ्रू आउट अ मैथमेटिकल प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्शन ए कांस्टेंट, ऑप्शन बी वेरिएबल, ऑप्शन सी फंक्शन, ऑप्शन डी none of the mentioned choices. What is the answer? Here is the answer A. Next question, a quantity which have different value in a particular mathematical process is called option A constant, option B variable, option C function, option D none of the mentioned choices. What is the answer? Here is the answer B. Next question is, if y is easily expressed in terms of variable x as y is equal to fx, then y is called option A an explicit function, option B an implicit function, option C an identity function, option D none of the mentioned choices. Here is the answer A. If y cannot be easily expressed in terms of variable x as y is equal to fx, then y is called option A an explicit function, B an implicit function, C an identity function, D none of the mentioned choices. Here in the statement is wrong, so just ignore is, and here the answer is B. Next MCQs. When we say that f is a function from set x to set y, then the set x is called option A domain of f, option B range of f, option C codomain of f, option D none of the mentioned choices. Here is the answer A. Next question, when we say that f is a function from set x to set y, then the set y is called option A domain of f, option B range of f, option C codomain of f, option D none of the mentioned choices. Here is the option C. Next, I don't speak, just you may read and give the answer. Here is answer B. If here the answer is A. The answer is C. This is a vertical line test to check the function. Option is B. Here is the option D.
This is just the definition. Option is D. This is the graph of the MCQs related to the increasing function. Option is A. Answer is B. This is the MCQs related to the even function. Fx is equal to x raised power n when n is u1. Then option A is y-axis, option B x-axis, option C origin, option D none of the mentioned choices. You may say the function about the symmetry of the function. Here also option A. ये ऑड फंक्शन है एफ एक्स इज रेज पावर एन एन इसमें ऑड लेने हैं आपने तो ये बताना है कि एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ऑप्शन ए ऑप्शन बी एक्स एक्सिस ऑप्शन सी ओरिजिन ऑप्शन डी none of the mentioned choices. So here is the answer. The function fx is for a where a is a constant is a power function. As the power gets larger, the curve tends to flatten towards the आपने ये बताना है कि y axis ऑप्शन A है, ऑप्शन B x axis, ऑप्शन C is origin, option D none of the mentioned choices. Here from the graph of the power function you can see that the graph is flattened about x axis. The option is B. Here again fx power a where a is even, then you see from the interval minus infinity to 0 the graph is decreasing. You will check, you see only the even functions, graph of the even functions. The function fx x power a where a is a constant is a power function. The graph of the function with odd powers are increasing option A, option B decreasing, option C flattened over the entire interval. So option is, again you have to see the graph which I have shown in the previous slides. The option is A, increasing. Here see only the even function is x modulus, I mean function option B. If the degree of the polynomial function is 1, then it is called option linear function C. This is the definition of a decreasing function. इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ग्राफ शिफ्टेड वर्टिकली. अगर y कंपोनेंट में कोई चीज़ ऐड हो, if you add some variable, some constant in the component of y, then the function will be vertically increasing. Option. So here fx plus k, this is the y component. We are adding y, k and y component. The graph will be shifted vertically. The option is A. In this, graph of the function shifted horizontally if we add something in x component. Here we have added k in x component, so the graph will be shifted horizontally. The option B is right.
Here we are multiplying a constant with the y component. Okay, if c is greater than 1, the graph will be vertically stretched. If this value is less than 1, then the graph vertically will be compressed. So here c is greater than 1, so option is A. In this c is greater than 1 and 1 over c is less than 1, so graph will be vertically will be compressed. This answer is option is B. Here c is greater than 0 and c is multiplying with x component, so graph will be there will be change in the graph horizontally. So option A and B are wrong because these options are related to the vertical shift. So a vertical compressor stress, these both options are wrong, so option is C. इसमें C is a constant, is negative में चीज़ें ज़रा उलट हो जाती हैं, तो अपने y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया है इससे माइनस से, this will reflects the graph around x-axis. तो ऑप्शन इज A. तो यहाँ माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है विद एक्स कंपोनेंट, क्योंकि माइनस में चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं. सो द ग्राफ विल बी रिफ्लेक्टेड around y-axis. So option is B. For a function, if its right-hand limit is equal to the left-hand limit, then which one is true? And we are talking about the limits, so the limit of the function will exist. Option B is right. Here, this is the definition of exponential function. In exponential function, okay, the base should be greater than 0. Here is the definition of the log function, and the base again should be option A is equal to 1, option B is equal to 0, option C is not equal to 1, option D is not equal to, A is not equal to 2. So answer is C. Here we end our presentation. Today is enough.